हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि रिव्यूज़ दूंगा इस जगह के मतलब, तो आज 4 दिन हो गए हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अबाउट 2 इयर्स लॉकडाउन में रहे हैं और कोई हॉलीडेज़ नहीं हुई हैं। अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ है हॉलीडेज़ कोई नहीं थी। आई मीन के यू कांट गो अब्रॉड, लोकल विद इन ए कंट्री यू कैन बुक योर हॉलीडेज़। तो यही डिसाइड किया कि चलें यहीं ट्राई करते हैं, और इस जगह पे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यही जगह मिली है। अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ हमने चेक की कॉर्नवॉल, स्केगनेस और 3-4 और जगह शॉर्ट लिस्टेड की, फिर डिसाइड किया चलें नेक्स्ट डे वन ऑफ दीज वी कैन बुक। जब नेक्स्ट डे बुकिंग का टाइम आया तो पता चला कि दे आर बुक्ड, फुली बुक्ड। फिर दोबारा सर्च की तो ये पोंटिन्स साउथपोर्ट ये बची थी। तो फिर वही लोरियों की तरह फड़ लो होगी, ये वाली फड़ ली। तो यहीं पे हमने कहा चलें देखते हैं। It's not too bad, to be honest. It's okay. लेकिन जो प्लस पॉइंट है ना वो यही है कि बीच फ्रंट, well you can call it front, but it's next to beach, you know, it's about not even 2 minutes away from the beach, so that is the plus point. Southport city center, it's not far, about 4 miles. You can walk there. इनसाइड यस बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ हैं, डिफरेंट गेम्स हैं आउटडोर लाइक मिनी गोल्फ, गो कार्ट एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़। इंडोर भी हैं, इंडोर इवनिंग को शोज़ भी होते हैं, लेकिन वी डिडंट गो देयर बिकॉज yeah, we were uncomfortable there, so we didn't go there. And yeah, other facilities like apartments. You can walk on this. Yeah, apartments are all right, but no bed sheets, no pillowcases. You have to buy. And सफाई सुथराई के लिहाज से भी आई वुड से लाइक यू नो व्हाट आई मीन। सो ये एक लेक भी है जिस पे हमने सुबह 5 बजे वीडियो बनाई है इस लेक पे, सिर्फ़ और सिर्फ सनराइज़ के लिए।
एक और प्लस पॉइंट है जी यहाँ पे, ये पोंटिन पार्क है और उसके बिल्कुल गेट के साथ टैक्सी स्टैंड भी है. सो यू कैन गेट टैक्सी वेर एवर यू वांट गो इफ़ यू आर नॉट ड्राइविंग. ये सामने बिल्डिंग है जो बंद पड़ी हुई है, प्राइम स्पॉट है लेकिन बंद है. डोंट नो, शायद पब रहा है कभी. बाकी सभी कुछ एवरेज ही है. टू बी ऑनेस्ट, वेर एवर आई गो ऑन हॉलीडेज आई डू चेक द स्टार रेटिंग, रिव्यूज़. But this time I didn't even check, so just booked it. But as long as kids are happy, that's all right. That's all about. Lake right there. Nice track बना हुआ है यहाँ पे, about I would say 2 miles around the lake, and other side of the lake is a beach, Annesday Beach. Evening time is very good walking down the beach. Daytime is all right, and Southport town center is about 4 miles from here. You can walk as well, but it's a good weather then. Otherwise it's better to drive or get the taxi. Quite a relaxing place. Well, outside the park, outside the Pontins. Inside is not relaxing. It's very hectic and tiring, you know. Kids are screaming. You can see here it's quite peaceful and nice. So ये थे मेरे रिव्यूज़. Now choice is yours. If you wanna come here, you can. As I said, it's okay for the kids. They enjoy it. That's okay. So bye bye for now. See you next time. Thank you.